हेलो गाइस, सबको मैं टेक्निकल सपोर्ट कर आपका स्वागत है। आज हम मेरे दुकान पे एक CPU असेंबल होने वाली है, जो i3 8 GB रैम है, 128 SSD है, 5 GB हार्ड डिस्क है, 19 इंच मॉनिटर। ठीक है, तो कस्टमर का रिपोर्ट है। ऐसे एक मशीन रेडी करना देना है। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं और कैसे इसको असेंबल करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को स्किप मत करना और देखना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, सो गाइस हम दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का CM61 का मदरबोर्ड। ठीक है, इसमें NVM है, शाटा की पोर्ट है, 3 शाटा की पोर्ट है कैपिस का। ठीक है, तो हम दे रहे हैं इसके साथ i3 थर्ड जनरेशन, i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है। ठीक है, i3 थर्ड प्रोसेसर 118 GB NVM SSD। ठीक है, जीबी इसकी जो है रैम है 8 GB 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। और एक है ये 500 GB हार्ड डिस्क, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ड डिस्क 5 GB एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम इस कैबिनेट पे इसको जो है इसको असेंबल करके हम इसको फिट करेंगे। i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। इस फैन सो गाइस हमें देखिए पूरा असेंबल हो गया। ठीक है, तो गाइस अब जो जैसे मेरे हम इसमें स्किप करेंगे। ठीक है, तो इस केबिनेट पे सेंटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ पावर दिए गए हैं और केबिनेट के अंदर ये वो नट। तो वैसे देखिए मैंने मदरबोर्ड लगा दिया, रैम ये देखिए, रैम सब असेंबल हो गया। ठीक है, अब इसमें CPU में विंडोज़ 10 हम इंस्टॉल करेंगे और सॉफ्टवेयर दे देंगे। तो ये जो i3 का जो मशीन था वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप विंडोज़ में इसको देते हैं, इसको।
गाइस मैंने आपको जो वीडियो में पहले मैं दिखाया था जो i3 असेंबल करने के लिए जो कस्टमर ने बोला था, ये देखिए प्रो मशीन असेंबल हो गया। और विंडोज 10 भी इसमें डाल दिया और सॉफ्टवेयर वगैरह जो जो काम का चीज़ था वो मैं सब इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और CPU, लैपटॉप, प्रिंटर सर्विसिंग हो तो मेरे पास भेज देना, मैं आपको कर दूँगा। ठीक है, तो गाइस टाटा बाय बाय।